इस वीडियो में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को बनाएंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि जनरेटर और मोटर के कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के सर्किट में लोड और सप्लाई का ही अंतर होता है। डीसी जनरेटर मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। डीसी जनरेटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक डीसी सीरीज जनरेटर। दो डीसी शंट जनरेटर। तीन डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। डीसी मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। डीसी मोटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक डीसी सीरीज मोटर। दो डीसी शंट मोटर। तीन डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। दो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर।